चलिए तो बच्चा लोग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेकंड टर्म में आपसे रिफ्लेक्शन नहीं पूछेगा, तो हम लोग ऑप्टिक्स में लास्ट दिन जो भी पढ़े थे उन सबको स्किप करते हुए सीधा रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में पहुंच गए, जो आपसे इस बार पूछेगा, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। हम लोग जब पहला क्लास पढ़ रहे थे, so in the last class we were very well aware of the fact that there are three cases of light. First, reflection, in which the light bounces back from any reflecting surface. Second is refraction, in which light passes from one medium to another with a slight bend. And third is dispersion, when light is scattered. Okay, so in this topic we will be discussing about refraction. Light will be passing from one medium to another. While comparing the two mediums, one will be denser and the other one will be rarer. And mark it, this denser and rarer term is not given with respect to its mass density. This is denser not because it has more mass density, and this is rarer not because it has less mass density. This denser and rarer terms are with respect to speed of light. The medium in which the speed of light is less is a denser medium. The medium in which speed of light is high is rarer medium. Again, this is not about mass density. There are many examples in which mass density is high but the object is optically rarer. For example, oil and water. And let me be specific. This oil is kerosene, which is denser mass with respect to mass density. While comparing kerosene and water, which is denser with respect to mass density? Kerosene. Okay, let us take an example. While you mix water and kerosene, which one of it flows on the upper part? Floats on the upper part. So if the kerosene is floating on the upper part, it means it has more mass density or lower mass density? That's it. So kerosene is optically rarer. Kerosene has higher lower mass density, while water has higher mass density. Isn't it? Kerosene has lower mass density while water has higher mass density. But when it comes about optical density, kerosene, despite of having lower mass density, has higher optical density, while water, despite of having higher mass density, has lower optical density. So optical density and mass density are two different things. Here we are talking about optical density. Denser means speed of lower. Rarer means speed of light is. Okay, this you must remember as a reference whenever you are asked to differentiate between optical density and mass density. Okay, coming forward, this is an imaginary interface. Interface is an imaginary line separating two different optical density mediums. This is optically denser, this is optically rarer. This is an imaginary line which is separating that denser and rarer part. And so it is called interface. Getting my point? Okay. The ray of light which comes towards the interface is known as incident ray. Okay. This is a normal. A line perpendicular to the interface is called normal. This is normal.
Now, whenever light goes from denser to rarer, it moves, or you may say it bends away from normal. Mind you, whenever you are free to move, you can deviate. If, for example, if your family stops giving pressure, you may deviate from the right path. But if there is a bunch of pressure, there are chances that a deviated person may come towards the right path. Isn't it? So, here, this is rarer medium. There is no pressure of the parents and the light is deviated away. The light is deviated away. So, this ray is refracted ray. Okay. The angle between incident ray and normal. This is angle I, not this. Angle of incidence or angle of refraction are always calculated with respect to normal. So, this is angle R. Angle R is not angle of reflection. This is angle of refraction. Refraction. Okay? Okay. Now, one more thing. If you place a mirror like this, mind it, this is an if. It is not the part of this concept. If you place a mirror perpendicular to the path of this refracted ray, so you will find that this refracted ray will reflect back. If it is a plane mirror, and any ray which falls normal to the plane mirror is reflected back on the same path. So, if this refracted ray is falling on a plane mirror perpendicularly, the refracted ray will reflect back and it will follow the same path. Means you may think that, okay, this time there is reflection, so light will go like this. But no. The light will follow the same path on which it came. Means it will go like this. Okay. And this phenomenon is known as principle of reversibility of light. It says that light can retrace its path. Light can retrace its path when it falls perpendicularly to any plane mirror, not surface. Now you can write. अगर इसी को आप नोट्स के फॉर्म में लिखिएगा एग्जाम में, तो आपको देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत कुछ बताएं. जैसे ये चीज जो लिख दिए, इसको आपको अपने दिमाग में रखना है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा. यहाँ पे डेंसर वगैरह लिख दी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तो लिखे, उसको शॉर्ट में लिखिए ताकि आप इसको अपने लैंग्वेज में एग्जाम में लिख लें. सारा चीज हम आपको बता रहे हैं, बस एग्जाम का लैंग्वेज अलग होगा. हाँ बिल्कुल.
Okay then. The next topic is Snell's law. This is the first law. This is the first law. Principle of reversibility of light. While moving from denser to rarer, light ray moves away from the normal. While moving from rarer to denser, for example, you can see like this. If the light is moving in this part, it tends to move like this. It should move like this if there is no refraction, but it is moving towards the normal. You can see now? So it is vice versa. Now second is Snell's law. Second is Snell's law or second law of refraction. Snell's law or second law of refraction. This is new. Mind it, this is new. Read as new. 1 mu2 means refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1. 1 mu2 is sin I by sin R, sin I by sin R, or this is of no use. Or it can also be written as mu2 by mu1. Okay, 1, 1, 1, but this is mu2 by mu1. So 1 mu2 is refractive index of 2 with respect to medium 1 is sin I by sin R is equal to refractive index of medium 2 by refractive index of medium 1, and this is a constant. This is a constant number for given pair of medium. For example, medium 1 and medium 2 are fixed, no? So this is a constant for, not always constant. It is constant for a given pair of medium. For example, for glass and water it is fixed. For air and water it is fixed. For air and glass it is fixed. But if you change that medium, two mediums, any of the two mediums, it will change. So it is a constant, but for given pair of mediums. Okay? Okay. mu1 sin I is equal to mu2 sin R. You can go for it or not. mu1 sin I is equal to mu2 sin R. So sin I is directly proportional to sin R. लिखो ये ठीक है, लिख देता हूं. mu1 sin I is equal to mu2 sin R, and this clearly shows that sin I is directly proportional to sin R. And the second thing, you might know, or might, I am confirmed that you are knowing. Maybe you are remembering or not, it can be possible, but you are knowing. You have studied basic maths in class 11th. Awesome, हो गया, नहीं? So you might have, no, you must have studied. You might be remembering that for a small sign,
for a smaller value of theta, sin theta is equivalent to theta. Sin theta is equivalent to theta for very small value of theta. While in case of cos theta, it is equivalent to 1 when theta tends to 0, and very small value of theta. Or in case of tan theta, it is again equivalent to theta. You are getting or not? साइन जितना छोटा होता है वैल्यू उसके बराबर आता है. साइन 0 0, साइन 30 1/2. तो तुम सोचो साइन 0 है तो वैल्यू 0 है, और साइन 30 हुआ तो बढ़ के सिर्फ 1/2 ही हुआ है, यानी बहुत छोटा में. जब मान लो साइन 1 होगा, सोच रहे हो 30 बढ़ा तो ये आधा हुआ है, तो जब साइन 1 हुआ होगा, 1 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना. फिर भी साइन 0.0 या 0.1 ही करते हैं ना, बहुत छोटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1 रहा हो. दैट्स इट. For a smaller value of I, you can say that I is directly proportional to R, angle of incidence is directly proportional to angle of diffraction, isn't it? Okay, so getting more simplified, this formula is modified like this: sin I by sin R V1 by V2 speed of light in medium 1 by speed of light in medium 2, lambda 1 by lambda 2, wavelength of light in lambda 1 by in medium 1 by wavelength of light in medium 2 is equal to mu 2 by mu 1. इसको याद रखना. एक ही चीज, ये v है, फ्रीक्वेंसी नहीं लगना चाहिए, वेलोसिटी and you can clearly go through it. याद कैसे रखें? ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सिर्फ mu 2 by mu 1 हुआ, बाकी सब ऊपर में जो यहाँ है वही वहां है. मतलब अगर तुम फॉर्मूला लिख रही हो 2 mu 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो फॉर्मूला होगा sin r by sin I. मतलब जो इसका एंगल वो लिखेंगे, r यानी इसका एंगल. वैसे लाइट एंड उधर से ही आ रहा तो यही हाई बन जाएगा, बट कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसको मीडियम 2 बोले, इसको मीडियम 1 बोले, तेरे को सोचना है कि इसका एंगल लिखेंगे, ये वाला एंगल. अब ये अलग बात है कि एंगल आई इसी को बोल देंगे उस वक्त, है ना. तो जो भी हो ये समझना है कि जो ऊपर में उसी का एंगल. आई ही लिखता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा. V1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं, मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, mu 1 by mu 2, यही बस बदलते हैं. ठीक है, चलो राइट डाउन, राइट डाउन जल्दी. छह क्लास बहुत, 6 भी नहीं, 5 क्लास मान के चलो. You will be getting your classes on Sunday also, okay?
Okay, now write down the next heading. Yes, we have enough time. Refraction through glass slab. Refraction through glass slab. हमको नहीं पता, याद ही नहीं है, बहुत तो कॉलेज से क्वेश्चन पूछे तुम सब तैयारी करो. Prepare as if you are preparing for boards. I don't know. And as per public demand, you will also be getting a test in MCQ format on wise. ऑफलाइन करना है? ओके देन चलो ये भी होगा वो भी होगा. ऑनलाइन नहीं देंगे फिर. नहीं तो ऑनलाइन क्यों लेंगे, जब ऑफलाइन लेगा तो ऑनलाइन क्यों लेंगे. ऑनलाइन में मेरे से जल्दी नहीं. So reflection through glass slab. There is nothing new in it. Here you are getting a glass slab. Light ray while coming towards the slab, here goes on with the first set of refraction, and while getting out of it, gets the second set of refraction. What you need to memorize is that this and this ray are parallel to each other. This is normal, and this ray is called incident ray. This is called refracted ray. Okay, refracted, R-E-F-R-A, refracted ray, and this one is called emergent ray. This is emergent ray. Now let the thickness of this slab be small t. Okay, this thickness we are taking as t. Now angle of incidence. This is angle of refraction. Angle R. This is again angle of refraction. Alternate interior angles. Geometry class 9th. This angle is called angle E. Angle of emergence. Angle of emergence. And look into it. This light ray, however, if it does not fall on a glass slab, it must have been passed like this, isn't it? अगर ये glass slab नहीं होता, so this light must have been passing through this path. But as of now, when there is a glass slab, the light deviates from the path and it is shifted. You can see it is shifted, and this shift is known as, let it be D. This is called lateral shift. What you note just now is emergent ray is parallel to incident ray.
imagined ray and imagined ray are parallel. And second thing is angle I is equal to angle E. डीसी पॉइंट है तुम्हारे पास? नहीं होगा तो ये सब जो डेफिनेशंस है उसको एग्जाम आइडिया से भेज देंगे, ठीक है? या हम तुमको बुक ही दे देंगे, तुम ही स्कैन करके ग्रुप में डाल देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। हम स्कैन करेंगे तो और टाइम लगेगा, तुम करोगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और सॉलिड्स और फ्लूइड्स का नोट्स तो भेजी थी, देखो किसी और को फॉरवर्ड करना तभी आ गया। क्या बहुत गंदे से लिखा है। क्यों? अच्छा, छोटा बच्चा लोग घर में भेजती हो? टाइम हो गया। No, it is just 24. अबे कंटिन्यूस नहीं है क्या? उल्टा कर दिया तो। अरे मेरे से इतना देर से वो बना है। ये तो उल्टा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का स्टार्ट तुम क्यों केस 3 से उसके पहले भी तो पढ़ाया हूँ। पूरा अच्छे से भेजे हैं। भले का नहीं अच्छा वो दूसरे वो करोगे तो फिर ठीक है। उसको इसका रिव्यू कर फ्लूइड्स देंगे। का हाँ, सॉलिड्स ठीक लग रहा है। हाँ, तुमको फिर से बनाना पड़ेगा। काम करना। हाँ, फिर से कर देना, आसान रहेगा। हाँ, तुम अपने ऊपर टेंशन किस ले लेंगे। Okay. So next, go for the formula of lateral shift. Lateral shift you are knowing now. Lateral shift is T sin I minus R by cos R. T thickness of the slab, इधर देखो, T is thickness of the slab, I minus R by cos R. Okay, wait a minute. For small I, for
स्मॉल आई, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। सो अगर एंगल आई बहुत छोटा तो एंगल आर भी बहुत छोटा होगा। आप पढ़ चुके हैं एंगल आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल आर। अगर एंगल आई बहुत छोटा है तो चलो cos आर बहुत छोटा है तो cos का वैल्यू 1 होता है, ये तो गया। और i माइनस आर, सिर्फ i माइनस आर बचेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, t इंटू आई माइनस आर, लैटरल शिफ्ट इज इक्वल टू t इंटू, कब होगा? क्योंकि साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा हो तो थीटा के बराबर हो जाता है, इसलिए आई एक कैसे ही छोटा था और आर भी छोटा था। अब तो और ऊपर से डिफरेंस है तो और छोटा, तो जाहिर सा बात सीधा हो गया। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, अगर हम इसमें से आई को हटाना चाहें, तो कैसे हटाएंगे? ऐसा लिख सकते हैं एल एस इज इक्वल टू टी इंटू, इन दोनों में ना आई से डिवाइड कर देते हैं तो बचेगा 1 आई बाई आई, और क्या बचेगा माइनस आर बाई आई। और इन दोनों को आई से डिवाइड किए। हाँ वो समझ आया, बट आई तो आ ही गया। हाँ आई आगे ठीक है, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ठीक है। अच्छा आई बाई आर म्यू होता था, तो आर बाई आई 1 बाई म्यू होगा। अब ये कब वैलिड है? जब आई छोटा, ये स्पेशल केस है, जब आई छोटा होगा तभी लगा सकते हैं, ये वाला कभी भी लगा सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं एल एस इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 बाई, तो अगर आपको ना आई दिया हो ना आर दिया हो, सिर्फ म्यू दिया हो तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो कैमरा में आ रहा है? ठीक, तो ये लिख लो और अगला हेडिंग डाल लेना है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। आई गेस हमारा स्पीड बहुत अच्छा है, 20-25 मिनट में अगर कोई इतना पढ़ लेना तो इट इज बवाल। चलिए, दिस इज ऑल फॉर टुडे।